गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 111th रैंक आया है 125 कंट्रीज़ में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। तो ये रैंक जो है वो एक तरह से और ख़राब ही हुआ है। पहले हमारा रैंक 107 था 121 कंट्रीज़ में, अब उसको जो है 111th दिया गया है। इंडिया का स्कोर जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 रखा गया है, और जो ग्लोबल लेवल का स्कोर है GHI का, वर्ल्ड का स्कोर, एवरेज स्कोर, वो 18.3 है। मतलब जो एवरेज, वर्ल्ड एवरेज से इंडिया का स्कोर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कम है इन कंटेक्स्ट की, हंगर ज़्यादा है। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो फिर भी बेटर फेयर कर रही हैं इस इंडेक्स में। लेकिन साउथ एशिया और अफ्रीका, जो साउथ ऑफ सहारा वाला अफ्रीका है, वो ऐसे रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पर हाईएस्ट हंगर लेवल्स हैं। अब हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जर्मनी बेस्ड वेल्ट हंगर लाइफ जो है, इन्होंने मिलकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो निकाला है। 2006 से निकाला जा रहा है। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये एक तरह से मॉनिटर करता है कि क्या कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है एंडिंग हंगर का, उसको अचीव कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। अब GHI को डिफ़ाइन कैसे किया गया है? 3 डायमेंशंस जो है हंगर की, वो कैप्चर करता है ये: इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शॉर्टफॉल्स इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अब ये इंडेक्स जो है 4 वेटेड इंडिकेटर्स को लेता है, उसके बेसिस पर ही इंडेक्स तैयार किया जाता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो एक तरह से 100 पॉइंट का स्केल होता है, 0 से 100 का, और बेस्ट और 0 मतलब बेस्ट होता है, और 100 मतलब वर्स्ट पॉसिबल स्कोर होते हैं रिस्पेक्टिवली। अब जो है क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब क्यों हम ग्लोबल हंगर में क्या, कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो लो इनकम और पॉवर्टी, वॉर और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जनरल लैक ऑफ फ्रीडम, लो विमेन स्टेटस और पुअरली टारगेटेड एंड डिलीवर्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। तो इन सब की वजह से जो है ये हंगर फैलती है। अब लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इसका क्रिटिसिज्म किया है रिपोर्ट का। तो अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे NGOs थे जो कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाने वाले NGOs के साथ इन्वॉल्व थे। तो इसलिए ये एक्यूजिशन लगाया जा रहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो ये कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करवाती है इस रिपोर्ट को। तो एनीवेज, हम क्रिटिसिज्म देखें अगर हम फैक्ट बेस्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये कहती है कि जो मेजर अडॉप्ट किया जा रहा है हंगर को मेजर करने के लिए, जो इंडिकेटर्स, वो फ्लॉड हैं। कैसे? जो हमारी पोषण ट्रैकर पोर्टल है वो ये दिखा रहा है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो 7.2% है, 7.24 करोड़ अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में। लेकिन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो 18.7% है, मतलब डबल से भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी कह रही है कि एक टेलीफोन बेस्ड ओपिनियन पोल के बेसिस पर ही अंडर नरिशमेंट को जो है वो कैलकुलेट किया गया है, जबकि हम तो जो है फूड बैलेंस शीट प्रॉपरली हम मेंटेन करते हैं पोषण ट्रैकर के थ्रू। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो NGOs हैं ये बस फ़ोन पर पूछते हैं कुछ लोगों से इंडिया में, उसके बेसिस पर ये वाइड पिक्चर बना देते हैं कि हाँ इतनी अंडर नरिशमेंट है, ठीक है ना। वो ये डेटा शेयर करते हैं कि किन लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जा रहे हैं इंडेक्स बनाने में, उसमें जो है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए जो है एडल्ट पॉपुलेशन के भी को भी जो है वो डेटा को भी सेम ही डेटा बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये तो वैलिड रीजंस हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो NGOs इन्वॉल्व हैं उनको ये आंसर करना चाहिए, ठीक है। बट 2-3 साल से वो कभी भी इसको कोई आंसर नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन अजय। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इजराइल हमास की जब वॉर हुई है तो इंडिया ने बोला है कि सोवरन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो उसको अभी भी सपोर्ट करते हैं, और साथ के साथ इंडिया ने ऑपरेशन अजय भी चलाया है ताकि अपने इंडियन नेशनल्स को वापस लाया जा सके। तो ये ऑपरेशन अजय कोई इवैक्यूएशन ऑपरेशन तो नहीं है, लेकिन जो सिटीजन्स इजराइल से इंडिया में वापस आना चाहते हैं उनको ये फैसिलिटेट करने के लिए चलाया गया है। अब इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया ने पहले तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था, ट्वीट करके रादर बोला था कि
वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आर, और उन्होंने बोला था कि ये टेररिस्ट अटैक है। तो इसी को ही एलैबोरेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन है हर कंट्री के ऊपर कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ऑब्जर्व करे। तो बेसिकली एक तरह से इसराइल को इसमें सुनाया गया है, क्योंकि गाज़ा के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो फ्लाउट हो रहा है। अब जब टेररिज्म का हम शब्द यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं इसराइल को, ठीक है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेररिज्म से लड़ने की। MEA ने ये भी बोला है कि हम चाहते हैं, इंडिया का ये पोजीशन सेम रहा है शुरू से, कि एक सोवरन, इंडिपेंडेंट और वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको एनालाइज करें इस रिस्पॉन्स को, तो इसराइल जो है वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, और इंडिया ये भी नहीं चाहता कि अरब वर्ल्ड को भी वो नाराज़ नहीं करना चाहता, जबकि अरब वर्ल्ड भी कोई अब इस टाइम पर इसराइल के प्रॉपरली अगेंस्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम UAE और बहरीन देखें, उन्होंने तो जो है अटैक को क्रिटिसाइज़ किया है जो हमास ने अटैक किया है इसराइल पे, और सऊदी अरेबिया ने एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए दोनों साइड की जो है बात की है, ठीक है। कतर, कुवैत और ओमान, दोनों ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के अगेंस्ट बोली हैं। तो एक तरह से अरब वर्ल्ड भी आपस में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंटीग्रेटेड जीनोमिक और एपिजेनोमिक स्टडी है, जिससे कि ये जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन डाइवर्स पॉपुलेशन। तो ये स्टडी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हर जगह होगी। 5 साल का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें DNA मिथाइलेशन पैटर्न्स जो है वो ऑब्जर्व किए जाएंगे। अभी हम देखते हैं DNA मिथाइलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और ये एक तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों की जा रही है रिसर्च, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से जो हैं जीन्स पर्टिकुलरली या ग्रुप्स या रीजन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो ज़्यादा प्रोन है कुछ पर्टिकुलर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से। क्या ऐसी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं कि जो एक ही पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा इफेक्टिव होंगी और दूसरे पार्ट में कम होंगी बिकॉज ऑफ जीन्स का जो है डिफरेंस। तो ये एक तरह से टारगेटेड इंटरवेंशंस लेके आना चाहता है, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स लेके आना चाहता है उन एरियाज़ में जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन वल्नरेबल है। तो अब ये DNA मिथाइलेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल ग्रुप्स, खासकर मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो DNA में अटैच कर दिए जाते हैं ताकि जीन्स को ऑन एंड ऑफ देखा जा सके, ठीक है। तो ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है। इसमें जो है बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इन्वायरमेंट सिग्नल्स को, ये जो है देखा जाता है। रिलेशनशिप्स फिर उससे अंडरस्टैंड किए जाते हैं DNA, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट के बीच में, और उससे हमें पता लगता है कि हेल्थ डिसीजेस में क्या जो है वो रिलेशन है जेनेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन CGIAR इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये जो है हैदराबाद बेस्ड, इन्होंने जो है वन कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ग्लोबल इनिशिएटिव इसको ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव है एक यूनिफाइड अप्रोच है फूड, लैंड और वाटर सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करने की, ताकि जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट क्राइसिस के वो उनसे बचाया जा सके इन्हें, ठीक है। तो ये एक पब्लिकली फंडेड नेटवर्क है CGIAR, और ये लगभग 80 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। अब ICRISAT क्या है, ICRISAT एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल पब्लिक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स को हेल्प करता है ड्राई लैंड्स में कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकें। 2021 में इनको अफ्रीका फूड प्राइज़ भी मिला था, और इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इनके 2 रीजनल हब्स भी हैं, ठीक है, दोनों ही अफ्रीका में हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं होलोडोमोर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री असेंबली जो है काउंसिल ऑफ यूरोप की, उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज़ किया है होलोडोमोर को एज अ जेनोसाइड। होलोडोमोर एक मैन मेड फेमीन थी सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, जो उस टाइम पर 1930s में सोवियत यूनियन का पार्ट होता था, वहाँ पर ये मैन मेड फेमीन जो है क्रिएट की गई थी, जिसमें 3.9 मिलियन पीपल मरे थे, ठीक है। तो इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो बंगाल फेमीन से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप ये एक दोहरा रवैया देखो यूरोप का
कि उन्होंने बंगाल फेमिन को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ जिनोसाइड, बट यूक्रेन में जो है वॉर चल रही है, यूक्रेन का साथ दे रहा है ईयू, तो इसीलिए जो है इस हॉलोडोमोर को जो है उन्होंने जेनोसाइड रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो एनीवेज जो प्राइमरी विक्टिम्स हैं हॉलोडोमोर के वो रूरल फार्मर्स और विलेजर्स थे, और ये सोवियत फेमिन थी जिससे मास स्टारवेशन हुआ था ग्रेन ग्रोइंग रीजन्स में सोवियत रशिया और कजाकिस्तान के। 2006 में यूक्रेन ने लॉ पास किया और हॉलोडोमोर को एक जिनोसाइड जो है वो डिक्लेयर किया। अब ये कॉजेज़ क्या थे इसके? सोवियत यूनियन के जो उस टाइम पे लीडर थे जोसेफ स्टालिन, इन्होंने एग्रीकल्चर को 1929 में कलेक्टिवाइज कर दिया था। पीजेंट्स को जो है उनके लैंड से उनसे लैंड छीन लिए गए थे, पर्सनल प्रॉपर्टी छीन ली गई थी, और जो नहीं मानता था उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था। और इससे हुआ क्या, कलेक्टिवाइजेशन की वजह से जो है प्रोडक्शन में ड्रॉप हुआ, फूड शॉर्टेजेस हुई, और उसकी वजह से ये फेमिन हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुंजी विलेज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी की रिसेंटली विजिट हुई गुंजी विलेज में नियर काला पानी उत्तराखंड में, उसकी वजह से जो है नेपाल में जो है कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है, तो ये गुंजी विलेज जो है ये धारचूला तहसील ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, नियर द बॉर्डर्स ऑफ तिब्बत एंड नेपाल, और ये कुथी यंगती और काला पानी रिवर्स के कॉन्फ्रेंस पर लोकेटेड है। ठीक है, ये माउंट एपी नेपाल को डायरेक्टली ओवरलुक करता है। जो पीपल यहाँ पर रहते हैं वो सीजनल माइग्रेंट्स हैं, गर्मियों में यहाँ पर आ जाते हैं, सर्दियों में नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ये एक जो रीजन है गुंजी विलेज, इसको सरपंच द्वारा चलाया जाता है। विलेज जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन नेपाली जो राउट है कैलाश मानसरोवर का, वहाँ पर लोकेटेड है। गुंजी विलेज में जाने के लिए जो है इंडियन सिटीजन्स को भी इनर लाइन परमिट लगता है। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है? एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इनवर्ड ट्रैवल के लिए किसी भी इंडियन सिटीजन को किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑब्लिगेटरी होता है इंडियन सिटीजन्स को ये ऑब्टेन करना प्रोटेक्टेड स्टेट में जाने से पहले, और उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, और खासकर जो एरियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं वहाँ पर ये ILP लेना ज़रूरी होता है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के टाइम पर से ये इनर लाइन परमिट जो है जनरेट किया जाता है। शुरू में तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहा जाता था, लेकिन बाद में 1950 में सिटीज़न ऑफ इंडिया शब्द से रिप्लेस कर दिया गया जिनको ये इनर लाइन परमिट मिलता है। तो कई तरह के होते हैं ये इनर लाइन परमिट्स, कुछ टूरिस्ट के लिए हो सकता है, कुछ लोग अगर वहाँ पर लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं उनके लिए अलग होता है इनर लाइन परमिट, कई लोग जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग होता है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Global Hunger Index. This topic is important for your social issues. So India has been ranked 111th out of 125 countries in the Global Hunger Index. So the government has responded by saying that this index is erroneous and it has a malified intent. So you must be remembering that last year, rather from the past many years, it has been accused by several of the newspapers and media reports that this global hunger index, the NGOs involved in framing this index were somehow linked to the Chinese Communist Party, okay, or the Chinese government. So that's why the government of India has raised several times the concerns regarding this involvement of Chinese government. Okay, anyways, we will also see how the government has responded on a fact based and how it has responded to the errors of this global hunger index on the basis of facts. So first of all, we have to see that India has scored 28.7 score in the global hunger index, even though the world average is 18.3, okay, which is considered moderate. So India's neighboring countries have even scored better than India in this index. So the South Asia region and the South of Sahara Africa region are the world regions where the highest level of hungers have been reported. So these two NGOs, US-based International Food Policy Research Institute and Germany-based Welt Hunger Life, they prepare this global hunger index, and this index basically aims to monitor whether the countries are achieving hunger-related sustainable development goal number 2, which aims to end hunger and all forms of malnutrition by 2033 or not.
So how this GHI has been defined? So it has three dimensions. So hunger has three dimensions as per this index. First of all is the insufficient availability of food. Second is the shortfall in nutritional status of children, and the third one is child mortality. So this index calculates the index is based on the calculation of weighted indicators: undernourishment, child wasting, child stunting, child mortality, and countries are ranked on a 100-point scale, with 0 being the best situation and 100 being the worst possible scores. Okay, so what factors contribute to a high global hunger index? If there is low income and poverty, war and violent conflict, general lack of freedom, low women's status, poorly targeted and delivered health and nutritional programs, then there is a possibility that global hunger index score would be lower for a particular country. So how the government has responded? Now let's see that. So Ministry of Women and Child Development has called this a flawed measure of hunger, which does not reflect India's true position. The government has said that we have this Poshan Tracker portal, which is tracking 7.24 crore under 5-year-old children, and child wasting is 7.2% among them. But the GHI has used the value of 18.7%, which is way above, even double of the actual reported child wasting in India. The second objection is that the GHI think tanks or these NGOs, they conduct only a telephone-based opinion poll. So just imagine this: these index makers, they are only making a call to some random people in India, and they are asking, or they are taking the survey, and they are not even revealing whom they have asked or whom they have called for this opinion poll. Okay, despite several questions by the Indian government, GHI NGOs, those who calculated, which we discussed above, they have failed to respond what was the sample size and how they have based their opinion poll regarding this undernourishment. There is also another issue that 3 of the 4 indicators which are being used for calculating this index are actually related to children, but those index have been used to portray that even adult population is having this particular problem. Okay, so this entire methodology seems very dubious. So the next topic is Operation Ajay. This topic is important for your international relations. So days after Israel-Hamas war broke, India has reiterated its call for the creation of a sovereign Palestinian state. We have also launched the chartered flight to bring back Indian nationals under Operation Ajay, which is an operation to bring back Indians from Israel. Of course, it is not an evacuation operation, but it is an operation to repatriate our citizens from Israel. Okay, so how India has responded to it? So India has initially said, the Prime Minister tweeted, he posted on X, that is Twitter, that we stand in solidarity with Israel at this difficult hour. So the Ministry of External Affairs has clarified recently that we reiterated our stand that we stand for a independent Palestinian state. Okay, so Ministry of External Affairs also highlighted that that all countries have a universal obligation to observe international humanitarian law. So this phrase is being seen as aimed against Israel because it is conducting aerial strikes in Gaza. Also, India has signaled a strong support for Israel because we have said that the world has a responsibility to fight against the menace of terrorism in all its forms and manifestations. So India has also advocated resumption of direct negotiations toward establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine. So why India is not being very clear? Actually, we have this Israel as a strategic partner on one side, but we also have to balance it with the Arab world, despite the fact that the Arab world is itself divided over this issue. For example, UAE and Bahrain, they have criticized the Hamas attack on Israel, but Saudi Arabia has tried to strike a balance by speaking on both sides, whereas Qatar, Kuwait and Oman, they have criticized Israel for the strikes against Gaza. So the next topic is diverse epigenetic epidemiology partnership. This topic is important for your science and tech section. So CSIR, Center for
cellular and molecular biology, Hyderabad is set to be part of diverse epigenetic epidemiology partnership, which is a groundbreaking integrated genomics and epigenomics study, which will understand the genetics behind non-communicable diseases in diverse populations across the world, including South Asia, of course. So this study will be conducted in Asia, Africa, North and South America, and it will be a 5-year international project, and it will use DNA methylation patterns, which will be able to study the disease risk in each population category. So software and infrastructure will be developed to statistically analyze the data, and this new resources will look at the variation in DNA methylation. Okay, so what will be the significance of this initiative? It will enable us to identify disease causing mechanisms worldwide, and whether certain particular groups or regions are more prone to certain diseases or not. And we would be able to identify whether medicines developed in one part of the world will be effective for all, or would it be suitable only for certain groups of population because of genetic diversity. This will also enable us to initiate targeted interventions or treatments and reduce global health disparity and inequity. So what is DNA methylation? So this is a process in which chemical groups, most probably the methyl groups, attach themselves to DNA so as to help turn genes on and off. So this is a type of epigenetic modification which helps the body to respond to environmental signals, and it becomes key to understand the relationship between DNA, genetics and environment, okay, which becomes a pathway for us to identify the relationship between health and diseases. So the next topic is one CGIAR initiative. This topic is important for your environment section. Recently, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics has joined the One Consultative Group on International Agriculture Research Global Initiative. So this One CGIAR Global Initiative is a unified approach to transform food, land and water systems and to address the challenges posed by a climate crisis. So CGIAR is a publicly funded network which is working in over 80 countries. Then what is ICRISAT? ICRISAT is a non-profit, non-political public international research organization which helps farmers in the dry land to fight climate change. So it has been awarded the 2021 Africa Food Prize also, and it is located in Hyderabad, that is in Telangana. It also has 2 regional hubs, both of them are in Africa. So the next topic is Holodomor. This topic is important for your international relations. So Parliamentary Assembly of the Council of Europe has recently voted to recognize Holodomor as a genocide. So Holodomor is similar to Bengal famine, but look at the hypocrisy of Europe, that it has recognized this Holodomor as a genocide, but it refuses to recognize Bengal famine as one. So anyways, Holodomor is a man-made famine which occurred in Soviet Republic of Ukraine in between the period of 1932 and 1933. It left an estimated 3.9 million people dead, whereas in Bengal famine, more than 4.2 million people died. This was the official figure. Of course, the real figure would be much higher. The primary victims of Holodomor were rural farmers and villagers. So it was part of a broader Soviet famine, and it caused mass starvation in the grain-growing regions of Soviet Russia and Kazakhstan. So in 2006, by law of Ukraine, the Holodomor was recognized as genocide of the Ukrainian nation, and the origins of famine lay in decision by the Soviet leader Joseph Stalin to collectivize agriculture in 1929. So teams of Communist Party forced peasants to relinquish their land, personal property, and also they collectivized farms. But those who opposed this collectivization, they were deported. So this collectivization led to a drop in crop production and disorganized the rural economy, and which led to food shortages. So the next topic is Gunji village. This topic is important for your international relations. PM Modi's recent visit to Gunji village near Kalapani, Uttarakhand has triggered uproar in Nepal. So this Gunji village is located in Dharchula Tehsil of Pithoragarh district of northern Uttarakhand. It is situated near the borders of Tibet and Nepal and at the confluence of Kuthi, Yangti and Kalapani rivers. So it overlooks AP
in Nepal, and the people residing here are seasonal migrants. So with winters, they migrate to the lower places in the same district. And as per the 2011 census, about 335 people live here, and this village is administered by a sarpanch. This village is on the traditional Indian Nepalese route to Kailash Mansarovar, and to visit Gunji, one has to obtain an inner line permit. What is an inner line permit? It is an official travel document which is issued by the government of India to allow inward travel to any Indian citizen into a protected area for a limited period. It is obligatory for Indian citizens to obtain a permit for entering these protected areas, and this is a document which is meant to regulate the movement of certain areas located near the international border of India. So, where did it originate? So this inner line permit originate from the Bengal Eastern Frontier Regulations of 1873, which protected Crown's interest in the tea, oil, and elephant trade by prohibiting British subjects from entering into protected areas. After independence, the term British subject was replaced by citizen of India in 1950. There are different kind of ILPs, one for tourists, another for people who intend to stay for a longer period of time, often for employment purposes. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.